क्लास 7 जोग्राफी चैप्टर 1 लेक्चर 1 वाई फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर वाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी द एनवायरनमेंट आंसर है इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। दूसरा क्वेश्चन गिव एन एग्जांपल टू प्रूव द डायनामिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट आंसर है रॉक्स डिसइंटीग्रेट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉइल इज एन एग्जांपल टू प्रूव द डायनामिक कैरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। वाई शुड द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट बी डन इन कंपोजिट फॉर्म गिव टू रीजन्स आंसर है द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट शुड बी डन इन कंपोजिट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग टू रीजन्स मैन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा रीज़न है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। चौथा क्वेश्चन है नेम टू स्टेप्स विच शुड बी टेकन बाय मैन टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट आंसर है एफॉरेस्टेशन एंड रिडक्शन इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट are the two steps that should be taken by man to maintain ecological balance। पांचवा क्वेश्चन है what is the name of the situation existing between physical and biological environment which is continuously affected by the changes आंसर है ecological imbalance is the name of the situation existing between biological environment which is continuously affected by the changes। Sixth number question name the composite form of physical and biological environment आंसर the composite form of physical and biological environment is ecosystem। अब long answer E का 1। Why is Earth called a unique planet? Answer Earth is called a unique planet because it possesses environment favorable for existence and growth of various life forms। Temperature is neither too hot nor too high nor too cold। Atmosphere around Earth has oxygen that is essential for all life forms। 2 number what is the mutual relationship between physical and biological environment answer biological environment keeps on influencing physical environment as man exploits the resources circumstances change physical appearance alters and physical environment varies। For example the body structure and lifestyle of pygmy tribe in the basin of Congo river is governed by physical environment। Third is environmental activism। Environmental activism is the coming together of various groups of individuals and organizations working collaboration in social, scientific, political and conservational fields with the main purpose of addressing environmental concerns। Fourth number question define ecological system। An ecological system is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment interacting as a system। Fifth number disturbance of ecological balance can adversely affect life explain with an example answer for example the primary disturbance regime in old growth forest is associated with death of individual large tree caused by disease insect attack or a lightning strike। आपका ये क्लास 7 का ख़त्म हो गया हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का एक चैप्टर।